Oh, nice. Lot of images. Okay, so we'll start one by one. We'll start from Rohan first. So should I share my screen? Yes, share your screen and let us see what you have done. All right, sir. 1 second. Please forgive me for the background noise if there is any. No, no, it's all here. Just keep your Just hands let me know ready. if you see my screen. Yeah, we can see the screen. All right, sir. Uh, so this is by far how much I've done. Okay. So how did you extract the background? So I try to figure out what are the kinds of elements that we need, like the text, the font, what kind of text styles are being used. So when I use these, I have this plugin called What Font and Color Pickers. So mainly the colors were chosen from through the color picker, added it in two squares, then. I saw that there was, if you can see here, you will find that there is a gradient here. So applied that color into the gradient as followed. Uh, then used, so basically I divided the thing into a layer grid, used a layer grid, added margins of 20 pixel and gutter of 20 pixel. And then because the font that was used in the website I did not have, I used a different font here, uh, which is 1 second, I'll just let you know. I think the font was You need to double click. It's Inter. a group. It's a group, so you need to double click on it. Oh yeah, okay, so this was Gilroy is what I used here. Thought that this was like, understood that this was very near to the font that is used here. If you can see, uh, Okay. pretty close but not exact. So then for the rest of the font styles, I used Okay. um, Inter regular, and accordingly used made the windows, saw that there is a drop shadow here, so try to apply the drop shadow. Then so I Just scroll stacked down. the. Scroll down. This is good attempt. This is very good attempt. Scroll down a bit. Okay. Okay. Scroll down. Okay. I did encounter a few problems here though. uh, for example, if I had since I've stacked frames here, but one, so these are overlapping with each other, so the images are not completely in one frame. So that is something, a lot of images, like for this one, it was getting overlapped, so, and it was hiding beneath the frame, I think. So that is something I could not figure out. For example, here the image here is behind the frame, so That's I could that's not fine understand. because since we are using the screenshot, that's going to happen because once you design that, or the graphic designer gives you the illustration or the lottery animations, that won't be an issue. Like, since we are using a screenshot, yeah, it's okay. If we add that over there, that's So then, completely apparent. So I tried to figure out how the textiles are, and then accordingly the layouts and stuff. this is good. And based on them, I made the different layouts and added here. ठीक है. Perfect. This is good attempt. Uh, Perfect. So next, I think we'll call Stuti Pandya. I'll stop presenting, sir. Yes, yes, yes. I'll share my screen. One second. Yes. Yeah, please share your screen, Stuti. Is it visible? Yes, it's visible.
So I've just made the first page. This is the reference page, and this is what I've made. Okay. Can you So zoom in a for bit? this, sorry, Just zoom in a bit. yeah. Okay. Okay. So for these, I have taken the screenshots and I've tried to merge the gradient. And for logo also, I've done taken the screenshot. The rest I have tried to use the font for enter. So Okay. I can't see a screen for some reason. Just a second. sorry, I can't see a screen for some reason. Can others see the screen? Stuti, you'll have to screen share again because Yeah. since the host turned off the video, the screen share went off. okay. I can't I can't find the option over here for screen sharing. Oh, just a second. Or you will have to provide access. I think there is. Can you try now? Yeah. Is it visible? Yes. Sorry for that. Yeah. So these I've taken the screenshots, the logo and these animation, and the rest I've tried to match it as close as possible. Okay. Okay. Good attempt. Again, good attempt. Uh, close. Thick. Fine, Sruti. Next, Anjana. Should I share the screen? Yes, please. Yes, it's visible. Okay. I have done only one single home page like this. Okay. So is this the image or you have designed this? Uh, like the pitch and this entire thing, like I've typed and done. Even the navigation bar is done by me, No, and the no. This pitch this box which says start with AI. Is that an image or you have designed? that is an image. Okay. Taken a screenshot and then pasted here. Okay. Okay. Cool. Cool. Fine. Next, Ria. You can share your screen. Just a second, sir. Just a second. Okay. In the meanwhile, Akshay, you can share your screen. That's fine. Is it visible? Yes. So this is the screenshot, and this is what I have designed only the starting part. That's fine. That's fine. So I didn't add the font, this logo font. So I have used the font which is I have used here. No Actually, worries. I have downloaded the font, the same fonts from. I have the plugin called Font Finder, so I have downloaded the same fonts which are used in the website. As the buttons. Okay. This is a screenshot. The background I have used Eclipse. Okay.
Cool, cool, cool. This is again a good attempt. Very nice. Very nice. Thank you, sir. Should I start? Yeah, Ria. Sorry. Yeah, Ria, you can share your screen. Is it visible? Yeah, just zoom in a bit. Yeah. So I have tried, but I could not get exact same things. It's okay. I That's have taken screenshot for this and have tried using your fonts. I don't know why I could not use Bliss circles and all over here. Rest all I have tried my best. This is a screenshot I've uploaded. scroll down. Okay. This much I've done. I'm working on this area, but I've completed this much. Okay. Okay. So if you see the first fold, right, the curve at the bottom, it's not a border radius that you have to give. You have to use an ellipse. The circle. Okay. Right. Okay. 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 Else, if you know how to use the pen tool, then you can do this, on the same character also. But if not, then you can use ellipse. Okay. Got it. Others, Aditya, it's okay if you have the mic issue, but if you can share the screen, at least we can have a look at it. Okay. Just zoom in a bit. We can see the screen. Just zoom in a bit. Okay. Okay. Scroll down. ठीक है. ठीक है. Fair start. Fair start. Okay. So are these the screenshots or you have designed this? Just click on something. I want to see whether it's a screenshot or yeah, it's a screenshot, right? Entire. Okay. ठीक है. ठीक है. Cool. 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 Others, Ashish, have you designed? Ashish, Aishwarya, Bhavika is not. She has. Yeah, it's okay. You don't have to speak. Just share the screen so that we can see the design. The sore throat is viral. Even I have that, but can't help it. मोहित, आपने बनाया है अगर यस सर मैं शेयर कर रहा हूँ किसी ठीक है एक बार ऐश्वर्या शेयर कर दो फिर आप शेयर कर ओके सर निशिकालन प्रथम निशिकालन प्रथम Yes, sir. सुकेशा आप सबने बनाया नहीं बनाया Yeah, I completed. So I honestly just started. ठीक I है came back from work like half an hour ago, so I just started working on it. नो वरीज जितना भी हुआ है बस शेयर करना है Okay. ठीक yeah we can see the screen Aishwarya if you can just open it no worries Aditya result आ जाएगा that's why we are in the course so you learn it so don't worry okay Ritik is saying he's not able to complete the task so Aishwarya नहीं ये बंद है right okay scroll down थोड़ा zoom out करना and scroll इतना ही है okay ठीक और ठीक है fair start प्रथम स्टूडेंट डिजाइन एग्जाम्स ओके सुकेश आप शेयर कर लीजिए
सुकेशा के बाद मोहित एंड मोहित के बाद निशी. Sukesha, are you sharing the screen? Hi, sir. Yes. Hi, sir. Yes. Just trying to do that. Okay. Um, is the screen visible? Yes. So I've just started with doing this swatch. Okay, so you have not designed yet anything? Um, just a second, I think. Uh, Just a second, sir. yeah, okay. Okay. So this much I've finished, and now let's just start. Okay. ठीक है, fine, fine, fine. Okay. Mohit, you can share the screen. हेलो. Okay. ये पूरा मैंने स्क्रिप्ट पूरा बनाया है. मेरे को बैकग्राउंड नहीं मिला, इसलिए मैंने इमेज ऐड किया इसमें. No worries. That's fine. ये सब टेक्स्ट वगैरह मैंने सब राइट किया है, ये सब ठीक है. एंगल वगैरह. Good start. At least सबने लेआउट तो ठीक ठीक पकड़ा है. Of course, जैसे धीरे धीरे हम लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे तो चीजें भी समझ में आ जाएगी कि कहाँ गलती है हमारी. No worries. निशी. Yes, sir. Is the screen visible? Yes. Okay. So I take a screenshot every pages. So I made first landing page. I don't have any kind of shape, so I take a screenshot and put it. And So which one is the screenshot? Left one, right? Or the right one? right one is a screenshot, and left one I made it. Okay. Okay. So the The font one tag, that you have designed. Zoom in the one that you have designed. नहीं, जो आपने बनाया उसको जूम करो. ये that's I made it. हाँ, नहीं, आपने बोला राइट वाला स्क्रीनशॉट है, I got confused. Sorry. Okay. So I'm texting made buttons, and I made it this navigation bar. I put the screenshot behind, and this one also take a screenshot. Navigation bar text, and this also I created. बट ये से अलग अलग में क्यों बनाया है? स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, इसलिए मैंने पूरा लेआउट नहीं बनाया, स्क्रीनशॉट से लिया है सब. पेज नहीं स्क्रॉल करके. नहीं नहीं, वैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आपने बनाया है कि ये सब स्क्रीनशॉट? ये मैंने बनाया है, और ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट है, ये वाले. करेक्ट. सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम बनाते हैं तो एक ही पेज पे बनाते हैं ना? ओके. इसको डबल क्लिक करो. करेक्ट. सो इसको एक ही पेज पे बनाते हैं, बार बार हेडर नहीं बनाते हैं. ओके. सो जैसे अगर वो रोहन वाला देखा होगा ना आपने. यस. हाँ, सो आपको आर्टबोर्ड की हाइट बड़ी करके वहीं पर उसके नीचे नीचे प्लेस करना.
Okay. I will notice that next time. ठीक है. Okay. So I complete these screens. ठीक है. Very good attempt. Very nice. Good efforts. It's very close to the actual, Okay. Thank you. it's actually very close to the original. Good attempt. Very good. Thank you. और किसी ने किया है? हर्षिदा जस्ट ज्वाइन. हर्षिदा आपने बनाया डिजाइन? हर्षिदा ओके ठीक है. Okay, so Harshita won't be able to speak. That's fine. Okay. So let's move ahead and continue our lecture. Let me quickly share my screen. ठीक है. So we'll move to our next, phase. जो हमने बेसिक देखा कि what is designing या replicate हम करते हैं तो कौन सी चीजें हमको ध्यान में देनी है. All of that, correct? So now let's see a very important thing. Sorry, which is design thinking. So जब आप इंटरव्यू में जाओगे, ये अगेन थियोरेटिकल है, कोई भी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस. ठीक है. सो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन. Is it visible? Yes, sir. So what is design thinking? ये सब अगेन टेक्स्ट बुक नॉलेज, टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस जो हम स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं. It's a problem solving approach that prioritizes the needs of the consumer. It is based. ये आपको कोई as it is word to word कभी नहीं पूछेगा इंटरव्यू में. जो पूछेंगे कि what is the process, the entire design thinking process. So the first step in design thinking is empathize. That means understanding the user. Okay, which is nothing but our user research. Right? कि हम यूजर को जितना जान सकते हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस को जितना जान पाएंगे, it is always easier for us to design for them. Okay? Second step is the define, जहाँ पे हम यूजर की नीड्स, यूजर की प्रॉब्लम वो सारी डिफाइन करते हैं. ये एक्चुअली यूजर जो है, मान लो अभी एक यूजर है विच इज ऑफ 60 years old, तो उसको करंटली क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड्स है, वो सब हम चीजें डिफाइन करते हैं. एंड देन वी क्रिएट स्पेसिफिक गोल्स फॉर. देन वी आइडिएट. when we say we ideate, तो हम अलग अलग आइडियाज लेके आते हैं, दूसरे एप्स देखते हैं, बेंचमार्किंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. हाँ ठीक है, ये ऐप के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, इस यूजर के लिए हम ये पर्टिकुलर अप्रोच लेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद प्रोटोटाइप इज नथिंग बट क्रिएटिंग द वायर फ्रेम्स, डूइंग द डिजाइन पार्ट, एवरीथिंग. जो यूआई यूएक्स है वो पूरा इन्होंने प्रोटोटाइप में समा दिया. ठीक है. स्पेसिफिकली अगर मैं वायर फ्रेमिंग और यूआई डिजाइन बोलूं, सो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोटोटाइप फेज इन द डिजाइन थिंग. एंड लास्टली इट इज द टेस्ट.
ये हम एक्चुअल यूजर्स को देते हैं और यूजर फिर हमको कोई फीडबैक देता है, ठीक है। तो यूजर जब कोई फीडबैक देता है तो हम उसको वापस इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज द एंटायर साइकिल, एम्फसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। टेस्ट करने के बाद वो वापस सेम साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। सो दिस इज द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। ये आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, आपको सेम बस फ्लो बोलना है, दैट इट इज एम्फसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। ये आप रट्टा भी मार सकते हो और इसका मीनिंग जैसे अभी हमने देखा इज वेरी सिंपल। या पहले यूजर को जानते हो, उसकी प्रॉब्लम्स डिफाइन करते हो, प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए आप आइडिएट करते हो, प्रोटोटाइप से आप उसका सोल्यूशन बताते हो एंड यू टेस्ट इट ऑन द यूजर्स। क्लियर? सो दिस इज द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। किसी को कोई डाउट्स इस पॉइंट पे? No, sir. Understood. ओके, ठीक है। सो मूविंग अहेड, these stages are not always sequential. कभी ऊपर नीचे भी होता है, क्योंकि जैसे मैंने कल बोला कि बहुत बार मे बी आप कोई रिसर्च भी ना करो, आपके पास ऑलरेडी रिसर्च है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसका सोल्यूशन पे भी जंप कर सकते हैं। नाउ यूजर एक्सपीरियंस ये हमने कल देखा क्या क्या होगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट जो हम रियल लाइफ में काम करते हैं। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। So sorry guys. Throat is getting super bad. ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स, सो जब हम एक्चुअली काम करेंगे, so there would be three types of projects that will get in the industry. So one is the existing one. So existing project में क्या होता है, जहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट लाइव है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो ऑलरेडी लाइव है, तो उसमें आपको जो रिसर्च करनी है, ठीक है, वो इजी है, क्योंकि क्लाइंट के पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा होगा,
उसमें अगर गूगल एनालिटिक्स होगे तो आप वो डेटा देख सकते हो, अगर हीट मैप होगा तो आप वो डेटा देख सकते हो ना। व्हाट इज हीट मैप? तो हीट मैप में यू गेट टू सी कि कौन सा यूजर कहाँ पर क्लिक कर रहा है, यू गेट टू सी कौन सा यूजर कहाँ स्क्रॉल कर रहा है, और उसके एक परसेंटेज आते हैं, और इफ इट इज रेड दैट मींस हाईएस्ट यूजर वहीं पर क्लिक कर रहा है। सो दैट इज समथिंग वी गेट फ्रॉम द हीट मैप्स। गूगल एनालिटिक्स पे हमको पता चलता है कि कौन से यूजर कहाँ पे कौन से पेज पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन से लोकेशन से आ रहे हैं, क्या उनका यू नो एज ग्रुप है, वो सब हमको गूगल एनालिटिक्स से पता चल जाएगा। राइट, कौन सा डिवाइस है, whether it is Android, whether it is iPhone, whether it is desktop और मोबाइल, सब हमको गूगल एनालिटिक्स से पता चलेगा। सो अगर एग्जिस्टिंग की प्रोजेक्ट है सो हमको डेटा वहां सबसे मिल सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में वी कैन आल्सो टॉक टू दी रियल यूजर्स, रियल क्लाइंट्स, ठीक है, जो हमको इंटरव्यूज के थ्रू हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द यूजर रिसर्च जो हमने ये देखा था ना, फर्स्ट यूजर रिसर्च। फिर उसके बाद आता है एक नया प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट मीन्स उसका एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मे भी हो सकता है दे आर इन द बिजनेस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन उनकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है। सो उस केस में आपको क्या करना है कि यू हैव टू डू जनरल रिसर्च, और जनरल रिसर्च में आप गूगल यूज करोगे, बार्ड यूज करोगे विच इज जेमिनाई, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, जैसे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना एआई। सो यू कैन मेक यूज ऑफ एआई इन जनरल रिसर्च विच इज दिस सेकंड पॉइंट। तो जनरल रिसर्च जब हम करते हैं तो तब हमको कंपटीशन की वेबसाइट भी देखनी होती है, तो कंपटीशन क्या कर रहा है उस करंटली इनके सेम डोमेन में, राइट। और उसमें आपका यूजर रिसर्च भी, आप पर्सोनास वगैरह बनाओगे और सब कुछ क्रिएट करोगे, एंड उनसे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स अगर वो बात करना दे आपको तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज न्यू आइडियाज, जो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे मान लो कोई आके बोलता है कि मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए only for construction goods. So currently there is no e-commerce website. India Mart वगैरह है, those are not e-commerce, those are listing websites. So कोई अगर नया ही आइडिया है, जैसे उबर, ओला थे, जोमेटो है, those were new ideas, स्विगी नए आइडिया, तो आप उसके लिए क्या ही रिसर्च कर लोगे, करेक्ट। तो उसमें आप आइडिया वैलिडेशन करते हैं, वो मेजरली तो बिजनेस वाले ही करते हैं आइडिया वैलिडेशन। वो हमारे पास एक स्कोप लेके आएंगे, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, हमको ऐसा एक ऐप, हमको ऐसी एक वेबसाइट बनानी है जहाँ पे एक्स वाई जी चीजें होनी है, तो उसका हमको उनको सोल्यूशन देना। तो वहां पर भी आपका पर्सोनास वगैरह बनाने का आइडियल पर्सोना ये होता है, उसके लिए हम ये वेबसाइट या ऐप बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल रिसर्च में आपको हार्डली कुछ मिलेगा सिंस द आइडिया इज न्यू, करेक्ट। सो इन दैट केस यू विल डायरेक्टली जंप टू द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई जो हमारा प्रोसेस है डिजाइन थिंकिंग का, और जो ये हमारे जो स्टेप्स है, इट कैन वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, इसलिए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट जान। कोई डाउट्स इसमें? So, sir, in the new ideas section, वहाँ पे मतलब basically a company comes up with an idea of something they want to do, and Yes, that we validate. correct. No, we don't even validate because that is more to do with the business guys. ये वो लोग वैलिडेट करके ही लाते हैं, our job is to design for them. So तो हम सर उनके न्यू लिए तो सर न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू आइडियाज में मेन डिफरेंस क्या होगा? न्यू प्रोजेक्ट में ये होगा कि एग्जिस्टिंग उनके पास कोई, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन की वेबसाइट तो है, लेकिन फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लो उनकी मोबाइल ऐप नहीं है, ठीक है। सो उनके लिए मोबाइल ऐप नया है, तो हमारे लिए वो न्यू प्रोजेक्ट क्यों है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोई डेटा नहीं है हमारे पास मोबाइल ऐप का, है ना। अगर मैं कोई चीज Okay. रिवैम्प करता हूँ, दैट इज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। कोई चीज अगर मैं स्क्रैच से बनाता हूँ, कोई एग्जिस्टिंग डेटा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत लोगों के पास है ना, ई कॉमर्स ऐप बहुत लोगों के पास है, इस क्लाइंट के पास नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट। एंड न्यू आइडिया मींस, न्यू आइडिया इटसेल्फ इज कि वो पूरे ग्लोब में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अभी भी,
So that's a new idea. जब स्विगी आया था so ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, राइट? कि जहाँ पर आप कोई डिलीवरी बंदा आके आपके घर पे आके खाना छोड़ देगा. It didn't exist. So that's a new idea. Okay. So ठीक है. pipeline project, new ideas like no, it's not like a pipeline project, but it's more to do with the overall ideation. It's so abhi, for example, मान लो कोई ठीक है, आई थिंक सबने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें क्या आया था कि एसी का रिप्लेसमेंट उसने ट्रेडिशनल अर्दनवेयर से कुछ तो बनाया था, करेक्ट? सो नाउ दैट इज अ न्यू आइडिया, वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. ही इज द फर्स्ट वन टू डू दैट, करेक्ट? तो अब उसके लिए आप क्या रिसर्च करोगे? देयर इज नो डेटा अवेलेबल बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन डूइंग इट, है ना? सो ऐसे जब चीजों के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो या मोबाइल ऐप बना रहे हो, देन इट्स अ न्यू आइडिया. ठीक है? ओके सर. नाउ कमिंग टू द यूजर रिसर्च, जैसे हमने बात की गूगल एनालिटिक्स से होती है, हीट मैप, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यूजर सर्वेज और यूजर इंटरव्यूज. ये सब हम भी करेंगे. ये तीन चीज हम करेंगे, ये दो चीज तो बस रीड करनी है. ठीक है, ये तीन चीज हम करेंगे, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यूजर सर्वेज एंड यूजर इंटरव्यूज. नाउ कमिंग टू द जनरल रिसर्च. अब जनरल रिसर्च क्या है? तो जनरल जो स्टैट्स अवेलेबल है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं, कौन से लोग आते हैं, है ना? ऑल ऑफ दो स्टैट्स. जनरल एनालिटिक्स के मोबाइल पे ज्यादा व्यू आते हैं, डेस्कटॉप पे व्यू आते हैं. यूजर रिलेटेड स्टैट्स, उनके क्या डेमोग्राफिक्स होते हैं, अगर यूजर का डेटा ऑलरेडी है, जो भी कि फीमेल ज्यादा आते हैं, मेल ज्यादा आते हैं, ऑल ऑफ देन द पर्सोनास. सो personas is something which is most important out of all, because then you know whom are you designing for. Sigma, I think we can skip because we have already covered कर लिया है. It's not the end of the lecture, don't worry. It's just the end of my slide. ठीक है? So अभी next हम क्या करेंगे? हमने ये देखा, हमने कल थोड़ा व्यू पोर्ट के बारे में भी जान लिया था. Now we'll start with one project. ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे. For that, I'll give you guys 5 minutes. Think about the project, okay, and put it in the group. I mean in the chat. It's 9:13 now. You guys have time till 9:18. ठीक है, 9:18 तक थिंक. आपको लग रहा है, जो भी लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए, थिंक ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड मुझे उसमें से जो अच्छा लगेगा विल पिक वन. Payment app is one example. Okay, like Google Pages app is one example. It can be website, it can be mobile app, it can be uh, you know a web app. Bank website, grocery app, a customized curated keyboard for sales apps to increase sales on one-to-one conversation. ये समझाना पड़ेगा रोमन नाइमी के, इसको तो समझा नहीं. What is this keyboard? एंड हम उसकी क्या बना रहे हैं? हम वेबसाइट बना रहे हैं कि मोबाइल ऐप बना रहे हैं? वेबसाइट फॉर फार्मर्स. प्लीज इलैबोरेट ऐश्वर्या. व्हाट इज द वेबसाइट फॉर फार्मर्स? क्या क्या फार्मर्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं. इट कैन बी एन ई कॉमर्स फॉर द फार्मर्स, जहाँ से वो सीड्स ले सकते हैं. इट कैन बी अ मोबाइल ऐप फॉर द फार्मर्स वेयर दे कैन
सी कि उनका जो क्रॉप है वो रेडी हुआ है कि नहीं. इट कैन बी मल्टीपल थिंग्स. So define what is the website performance. Others, quick, please reply on the chat. Electric car and bike app that connects patients with different doctors like AstroTalk. Okay, the website on an idea which is my main portfolio as well. Publics where you can go caretaker for elders, and it's a website where you can the okay, okay. So Aditya, what is food app? Are we delivering the food? Are we cooking the food? What's a food app? Like Ola Android display UI. Oh, okay. Scooter वाला बोल रहा है. अभी के लिए we'll stick to first, the mobile app या फिर website or a web app, not any other devices. Lead management web app. Nice. Salad app. Salad app में क्या करेंगे भाविका? आर्ट एंड क्रिएटिविटी ऐप. थोड़ा इलेबोरेट करके लिखो कि आर्ट एंड क्रिएटिविटी ऐप में क्या होगा. कोई सिखाएगा, कोई चीज खरीदेगा, क्या होगा. थोड़ा इलेबोरेट करके लिखो. Students can order as well as see the vacancy of benches in the canteen, and the restaurant can manage the orders. Okay. ठीक है. Others, Sukesha और कौन बचा है? ऋतिक, मेहुल, निशी, सुप्रिया, सुकेशा, स्तुति. अब सबके अभी भी आने बाकी है. An app that can send signal to nearest ambulance in case of accident. New startup company, they just start their restaurant kind of surface and app for maid. Basically, they have been able to find maid. Nice. Scooty, yes, grocery app. Yes. Ocean clean where we can clean the ocean. So इसके लिए ऐप या वेबसाइट कैसे हेल्प करेगा ओशन क्लीन के लिए. वो तो अपने आप में एक ऑटोमेटिव प्रोडक्ट है. अच्छा, यूजिंग वेबसाइट पर अगर वो गवर्नमेंट के लिए है तो फिर वेबसाइट इज जस्ट फॉर नेम सेक, फॉर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट. Patients can connect with doctor or video and do payments like that. E-commerce platform for farmers to be able to sell their products like Kisan Connect. Links. You can also have medicines listed in the app. Okay. Tickets and hotel booking app like Make My Trip. Nice. बहुत सारे आइडिया है नहीं. ठीक है. So the ones that I like थोड़े अलग है, थोड़े हटके है. अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, बट आई लाइक द आइडिया. Logistics app idea that I worked on for Toyota Design Challenge in terms of automation. Okay. Blood donation, people can donate blood at the nearest user. Particular blood group is available. Okay.
Hmm. So one, we are definitely doing, app for maid. I'll tell you the reason, because that's a problem. जो हर घर में होती है, कोई अगर सिंगल रहता है, उसके घर में भी होती है. So one is definitely, app for maid. ठीक है. One is what we are doing is first project. This is the app for maid. Second project that we'll do is looking वाला भी आप ठीक है. ठीक है. एक मेरी तरफ से we will design a website, ठीक है, for a SaaS platform. ठीक है. Now what is that SaaS platform? We'll figure out later. And एक जो हम करेंगे, that would be हाँ, एक हम ये करेंगे, patients can connect with doctor via video call and do the payments as well. Okay. And इसी में हम ऐड करेंगे, they can also buy medicines from there. Okay, so e-commerce भी आ जाएगा. और rather I think ये booking वाला तो हो जाएगा. Let's do one this a restaurant management app, which is for the canteen, जिसमें हमारा एक इंटरफेस होगा for the student and one can be a web app for the canteen guys, which would be interesting. So we cover one mobile app, two mobile apps, क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए भी एक रेस्टोरेंट ये जो कैंटीन वाला है तो स्टूडेंट्स के लिए it will be an app and for canteen guys it would be a web app. वेबसाइट फॉर अ SaaS प्लेटफॉर्म, तो वहाँ हमको एक लैंडिंग पेजेस और मार्केटिंग की वेबसाइट आती, एंड वन इज ऐप फॉर द मेल. ओके, so these three are the projects that we'll work on. So हो सकता है कि कुछ चीज हम कुछ चीज हो सकता है हम शायद क्लास के दौरान कंप्लीट ना भी कर पाए, बट विल मेक श्योर दैट वी वर्क ऑन दीज थ्री. तो ये हमारा 3 पोर्टफोलियो में आ जाएंगे. ठीक है. So I'll also make a list for myself. ठीक है, done. So we'll first start with the app for mail. So basically this app will help people to find mail in their by nearby area. ठीक है, done. अब आइडिया तो पता चल गया, स्कोप आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा रिफाइन करेंगे. Okay, so let me use ChatGPT and create a good scope. Okay, create, let me share my screen so you guys also know how to do it. Create a
project scope of work on the idea app for maid where the applicant people to find maid in LY areas. Also, they can book maids for a day, month, or recurring basis, which is a traditional way. Maid finder app is required, effective, define, always searching. अच्छा ठीक है, हमको ये सब नहीं बनाना है, ABM बनी बनाए। ऑलराइट, सो हम इतना अभी फोकस करेंगे। प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ठीक है, ये दो पार्ट। ऑलराइट, आई विल क्लोज दिस आल्सो इन द ग्रुप। ठीक है, ये मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा। बट सी, जब हमको क्लाइंट भी जब ब्रीफ देगा ना, या हमारे पास जब स्कोप आएगा तो ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पर वो बताएगा कि ऐप करता क्या है, उसको कौन से फीचर्स चाहिए बेसिकली। ऑलराइट, अब लेट्स ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर ऑन दिस। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली वर्क इन अ कंपनी। तो जब आपके पास ये स्कोप आया, एवरीवन कैन सी, सो जब आपके पास ये स्कोप आ गया, सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए। ठीक है, सो विल फर्स्ट स्टार्ट जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, एंड इफ समवन कैन आंसर लेट मी नो। ओके, हाउ विल द मेड्स, ठीक है, बी रजिस्टर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, यूजर को तो मोबाइल ऐप मिल गया जहां पर वो सर्च कर लेगा नियर बाय, लेकिन डेटाबेस में आएगा कैसे मेड का डिटेल्स? एनीवन? ये सारे क्वेश्चन हमको क्लाइंट से पूछ। यस वन सर, वी कैन स्कैन। अभी हम हर किसी के पास आधार कार्ड है, राइट, या तो पैन कार्ड है, तो हम आधार कार्ड और पैन कार्ड को स्कैन करके उनके बेसिक डिटेल्स निकाल सकते हैं। नहीं, पर मैं पूछ रहा हूँ इन द फर्स्ट प्लेस आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेड मेड पहले तो खुद आएगी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेगी, या जो क्लाइंट है, ठीक है, मेड फाइंडर जो ऐप है, या वो लोग मेड के पास जाके उनको रजिस्टर करेंगे? So I guess a simple form would be better for maids. बट मेड को अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो फॉर्म कैसे भरेंगे? हाँ, जो भी क्वेश्चन है वी कैन टाई अप विद एजेंसी एंड फॉर्म पढ़ना लिखना नहीं आता, पर अलग भाषा में तो जा सकते हैं ना फॉर्म, हिंदी इंग्लिश वैसे। बट इमेजिन कोई मेड जाके सर्च थोड़ी करेगी। अभी नाउ थिंक फ्रॉम अ मेड्स एंगल, एज अ UIUX डिजाइनर यू हैव टू गेट इनटू देयर शूज। ठीक है, तो ऐसा आप क्या करोगे कि मेड प्लेटफॉर्म पे आएगी? रिया, यू हैव टू से समथिंग। Yes, sir. Actually, I think I'm not sure if it's right or not. The word of mouth is there only. Like word of mouth. एक maid को भी, if the person knows, एक maid को भी पढ़ना लिखना आता है, she is going to spread a word out कि ऐसा ऐसा app है, you can download. And once if she comes on the app, with the help of AI or with normally also, there is this button like play, where the app can talk, मतलब क्या लिखा है, like there is read what is it is written.
तो अगर बेसिक भी उसको समझ में आ गया कि इस पे क्लिक करने से वो बोलने लगे सपोज आपका नाम क्या है, अगर इज द क्वेश्चन ऑन द ऐप, so the app can also speak and the maid can just reply to that with the help of button कि मेरा नाम ये है So like a Google Assistant. It's a very high tech solution. First tell me, यहाँ पर हम 18 लोग हैं, ठीक है? How so, Supriya, आपके जो ideas है, it is more to do with the marketing, but here what we are trying to do is not the marketing piece, ठीक है? हम थोड़ा और technical समझ रहे हैं. First thing, यहाँ पर से कितने लोगों के घर पे मेड आती है? Just raise your hands. ठीक है. अब कितने लोगों ने उनके पास एक स्मार्टफोन देखा है? लो योर हैंड्स एंड रेज योर हैंड्स अगेन. जिन्होंने भी मेट्स के पास स्मार्टफोन देखा है वो हाथ ऊपर करो. ओनली 3. मेरे घर पे जाते हैं उस पे नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, जब हम इसलिए जो रिसर्च करते हैं, राइट, हम जो यूजर पर्सोनास बनाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ you will understand the flow as to why do we do certain things, right? So होगा क्या, सबसे पहले as a UI UX designer you have to think very broadly. क्लाइंट ने बोल दिया ना कि ये प्रोजेक्ट है, ये करना है, थिंक फर्स्ट थिंग कि ये प्रोजेक्ट मेरा है. ठीक है. अगर ये प्रोजेक्ट आपका है, हाउ आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस? ठीक है. कि मेड्स को हम सिस्टम में कैसे लेके आए. अब जरूरी नहीं है कि हर मेड को ना सब कुछ आता हो. Can you share my screen and show something? ठीक है. So let's write down few things. एक how do we get mates on board? एक क्वेश्चन सबसे पहले. दूसरा क्वेश्चन आएगा कि चलो इसका आंसर देखते हैं. एक जो मुझे लग रहा है आंसर है एंड यू गाइस कैन ऐड. ठीक है. एक हो सकता है 1-to-1 मिलके मीट 1-to-1 एंड ऑन बोर्ड देम ऑफलाइन. ठीक है. सो जैसे अगर आपने ये देखा होगा क्या बोलते हैं फोन पे या पेटीएम वाले, तो उन्होंने क्या किया, वो हर एक शॉप में जा जाके सबको उन्होंने ऑनबोर्ड किया. करेक्ट. गेटिंग माय पॉइंट. तो जिसके पास भी नहीं है उसके पास भी पहुंच गया फिर. सो दे हैव टू ऑनबोर्ड वन बाय वन. तो इससे क्या होगा, दे विल हैव मेड्स ऑनबोर्ड. अब मेड जब ऑनबोर्ड होगी तो उसका एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ मैप होगा. सो नाउ जो हमारा फर्स्ट था कि मेड कैसे आएगी, तो उसका आंसर है द बिजनेस टीम will onboard them offline. So maids हमारे प्लेटफॉर्म पे खुद से कभी नहीं आएगी, उसको लाया जाएगा. और अगर वर्ड ऑफ माउथ होता भी है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में देयर इज अ सेल्स टीम जो बोलती है कि अगर और भी कोई मेड को आप लेके आते हो सो यू गेट बेनिफिट, है ना. तो यहाँ पर रेफरल भी आ जाता है अगेन. सो यू गेट रेफरल टू मेड्स, राइट. ये भी लेकिन होगा ऑफलाइन. ठीक है. नाउ यस वन. सर बट अगर रेफरल्स यूज करते हैं तो वो रेफरल्स कैसे वो मेड्स एक्सेस करेंगी या उनको कैसे एक्सेस करवाया जाएगा?
वो भी एक उनको डिफिकल्ट पाथवे हो सकता है। नहीं, बट इट इज नॉट आवर हेडेक अगेन एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला मेड्स खुद प्लेटफॉर्म पे सिस्टम पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका प्रोसेस कैसा होगा, मान लो मैं मेड हूँ, ठीक है, ठीक है। और आप सब क्लाइंट्स हो, so there are 50 maids, I am one of them. So जब रोहन कोई क्वेरी रेज कर रहा है, राइट, मेरा सब डिटेल्स सिस्टम में मैप है ऑलरेडी, एंड होगा क्या, जब रोहन देख रहा है कि हर्ष मेहता मेड, ठीक है, आई वांट टू गेट इन टच, मैं जैसे ही उस पर गेट इन टच क्लिक करता हूँ, और क्वेरी विल बी रेज्ड टू द बिजनेस गाइज, टू द एडमिन, ठीक है, और वो फिर मेड से बात करके दे विल कनेक्ट, या फिर सिस्टम के थ्रू ही डायरेक्ट मेड को कॉल होगा कि मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला है, आई वुड लाइक टू बुक यू वट एवर, ठीक है, या इसको एक स्टेप और अहेड लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैंने मेड सिलेक्ट कर दिया, उसमें फिर मैं मेरी इंक्वायरी रेज कर रहा हूँ, आई वांटेड फॉर मंथ, आई वांटेड फॉर वन डे, आई वांटेड फॉर मंथली रिकरिंग फॉर एवर, वैसे। तो वो जो क्वेरी है वो फिर बिजनेस वाले उस मेड से बात करेंगे कि ऐसी ऐसी क्वेरी है, आर यू अवेलेबल, ठीक है, एंड देन सो द बिजनेस गाइज विल अर्न फ्रॉम देयर। अगर डायरेक्ट मेड से ही बात कर लेंगे सो बिजनेस गाइज वोंट अर्न, करेक्ट। सो इसीलिए द बिजनेस गाइज, द एजेंसी जिसकी हम वेबसाइट या बना रहे, जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, दे विल हेल्प अस फाइंड द मेड्स टू देयर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, एंड हम पेमेंट भी उनको उसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, द फर्स्ट पेमेंट। उसके बाद शायद हम उनको अलग से कर ले, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट द फर्स्ट पेमेंट गोज टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो दिस कैन बी अ प्रॉपर स्कोप। इनफैक्ट इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, जैसे ही मैंने मेड ऑनबोर्ड किया था, अगर मैंने मेरा एक बोला मेरा बेस प्राइस मान लो 500 पर मंथ, सो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आईसी के हर्ष मेहता का बेस प्राइस इज 500 पर मंथ, ना फॉर वन वर्क, इट इज 1000 रुपीज फॉर 3 वर्क, वैसे। तो वो सारी आपको एक कैटलॉग जैसा मिल जाएगा बिफोर इवन बुकिंग अ नेम। सो दिस इज हाउ यू विल गेट स्कोप। जैसे बिजनेस वाले कुछ चीजें सेट करके ही आएंगे आपके पास, सब कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, लेकिन नाउ सिंस वी हैव अ फाइनल स्कोप, हम इसके ऊपर बिल्ड करेंगे। तो टारगेट ऑडियंस अब हमारा मेड नहीं है, करेक्ट, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हाउसवाइफ्स। तो हमको अब उसके लिए सोचना। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर हुआ? हाउ डू यू थिंक? क्योंकि एक बार अगर मेड को कोई काम मिल गया है, मान लो मंथली, तो वो बार बार तो एजेंसी के पास भी नहीं जाएगी, है ना। हाँ, अगर उसको और चाहिए, अगर वो पार्ट टाइम ही कर रही है, जैसे अगर किसी को सिर्फ बोला कि उसको झाड़ू पोता ही करना है एग्जाम्पल, तो ठीक है, शी हैज रेस्ट ऑफ द डे, तो वो एजेंसी वाला वापस उसको अप्रोच कर सकता है कि आपके एरिया में एक और भी आया है, आर यू इंटरेस्टेड, समथिंग ऑफ दैट। उसके बाद फिर एजेंसी वाला खुद भी उसको स्टॉप कर देगा बिकॉज शी इज नाउ ओवरलोडेड। सो ये जो थॉट प्रोसेस है, या ये जो क्वेश्चंस है, ये डेवलप होंगे धीरे धीरे। बट आर वी नाउ क्लियर ऑन द प्रोजेक्ट? हमको क्या करना है? किसी को कोई डाउट्स? नो सर। ओके, अदर्स? पर सर कैटलॉग करेंगे, आप जैसे सर्विसेज का कैटलॉग का बोल रहे थे ना, जैसे अभी जैसे 5 एक सपोज मेड वन इज टेकिंग मतलब 500 फॉर जस्ट झाड़ू पोछा, एंड अगर झाड़ू पोछा प्लस बर्तन करने हैं तो उसके लिए शायद 1000 हो सकता है। तो वो पर मेड के हिसाब से मतलब अभी ये मेड वन का है, मेड टू का वही चीज डिफरेंट रेट भी हो सकता है ना? करेक्ट, होगा ही, वो होगा ही, होगा ही, होगा क्योंकि ही। ऑब्वियसली नो टू मेड्स विल हैव द सेम ये, और स्टैंडर्डाइज भी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, नहीं वो अलग ही होगा, इसलिए वो
जब ऑनबोर्ड करेंगे तो वो उनसे रेट्स पूछ के ही डालेंगे. Okay. Okay. So it will all be offline. Okay. ठीक है. सो आज हमने मेजर क्या देखा? फर्स्ट वी सॉ द डिजाइन थिंकिंग. ठीक है. देन वी सॉ द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट दैट वी विल गेट इन द करियर. देन वी सॉ different ideas that everyone thought of, and then now we will start building up a project. ठीक है. सो फाइनल जो एक स्कोप है वो मैं आज भेजूंगा आफ्टर द लेक्चर कि हम किस पे काम करेंगे. सो कल हम क्या करेंगे? सॉरी, कल नहीं, फ्राइडे. फ्राइडे हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट with our user research, ठीक है, and the user personas. ऑलराइट. तब तक आप लोगों को क्या करना है? तब तक आप लोगों को ना एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है आपके हिसाब से, जिसमें आप गूगल पे एक गूगल फॉर्म बनाओगे. यू विल आस्क क्वेश्चंस टू द टारगेट ऑडियंस विच इज हाउसवाइफ, विच इज पेइंग गेस्ट, ठीक है, विच इज someone who is visiting say once or twice in a month, और उसको उसका घर साफ करवाना है. हो सकता है ना. सो फर्स्ट थिंग, आप अपने एंड पे, एंड ऑल्सो राइट इन द चैट, डिसाइड और rather define who all will use the app. ठीक है, दैट इज फर्स्ट. खाली उसका लिस्ट बना, तो ज्यादा लिखना नहीं है, बस लिस्ट इट डाउन. इट कैन बी हाउस वाइफ, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दैट. वैसे वो हो जाने के बाद राइट questions that you can ask these users. Okay. So अब ये जब आप क्वेश्चन उनसे पूछोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे आपको कुछ इनपुट मिले. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन, हाउ ऑफन मेड कम्स टू योर होम. एक क्वेश्चन हुआ. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मच डज शी चार्ज if you have a maid, how much does she charge right now? How much holidays does she take in a month? या ऐसा हो सकता है कि how often do you change your maid? कुछ भी हो सकता है ना. These are my primary questions. ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसका एक गूगल फॉर्म बनाओ एंड सेंड इट अक्रॉस टू पीपल यू नो. बिल्कुल बेशरम हो. ठीक है. टेल देम दैट आई एम वर्किंग ऑन एन ऐप and this is the idea, so I want to know your inputs. आप जितने क्वेश्चंस डाल सकते हो. ट्राई करना 15 तो हो, 15 क्वेश्चंस. उससे ज्यादा मत करना वरना लोग बोर हो जाएंगे. उससे कम मत करना वरना आपको शायद डेटा कम मिले. ठीक है. दिस इज पार्ट ऑफ द यूजर रिसर्च. ठीक है. सो इन दिस टाइम पीरियड which is tomorrow's entire day and day after tomorrow till our lectures time 8:30, आपको ये क्वेश्चन जितने लोगों से आप भरवा सकते हो आपको भरवाना है. तो आपको सबसे पहले खुद के लिए डिफाइन करना है कि कौन टारगेट ऑडियंस होंगे, और दूसरा आपको डिफाइन करना है कि क्या क्या क्वेश्चंस मैं उस ऑडियंस से पूछ सकता हूँ. ठीक है. कोई डाउट्स? नो डाउट सर. पर सर क्वेश्चन टाइप्स में सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले क्वेश्चंस होंगे या वी कैन मेक इट इन डिफरेंट टाइप्स आल्सो? नहीं, आप जैसे उसको मल्टीपल चॉइस कर सकते हो, आप उसको सिंगल चॉइस कर सकते हो. यू कैन आल्सो हैव इट पीपल राइटिंग अ स्मॉल पैरा. इट कैन बी एनीथिंग. सो मेक इट स्मार्ट सो दैट. अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यू डोंट मेक पीपल राइट आंसर्स. वो नहीं लिखेंगे. अगर आप ऑप्शंस दे सकते हो एमसीक्यू टाइप, इट इज मच बेटर. जैसे हाउ ऑफन डू यू चेंज योर मेड? ट्वाइस अ मंथ, सिक्स, वंस इन अ ईयर. लास्ट में एक अदर दे देना कि अगर किसी का कुछ और ही आंसर है तो अदर में लिख देंगे. ठीक है. ऑलराइट. बाकियों को कोई कुछ डाउट्स, क्वेरीज?
No? ठीक है, डन. So एक तो ये आपका असाइनमेंट हो गया, which is the questionnaire, and complete the pitch.com का वेबसाइट. ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चनर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा. एक बार बन गया आपको, फिर उसको बस सेंड करना है सबको, और तब तक फिर आपको जो pitch.com की वेबसाइट है आप उसको कंप्लीट करो, उसका होम पेज पूरा कंप्लीट करो. ठीक है, और निशी आपने जैसे अलग अलग आर्टबोर्ड बनाए थे, डोंट मेक डिफरेंट आर्टबोर्ड्स, एक ही आर्टबोर्ड में उसको कंटिन्यू एक होम पेज करो. Okay. ठीक है, और जिसने नहीं बनाया है प्लीज मेक श्योर यू कंप्लीट इट. सुप्रिया, मोहित ने तो किया था, सुप्रिया है, सुकेशा है, रिया का बाकी है, प्रथम, ऋतिक, जिनका जिनका बाकी है प्लीज मेक श्योर कि आप कंप्लीट करो. यू हैव टाइम. भाविका ऑल्सो. यस. सो मेक श्योर यू गाइज at least start and complete it जितना हो सके उतना. आई एम नॉट सेइंग कि उसको परफेक्ट बनाओ. इट इज ओके अगर परफेक्ट नहीं बन रहा है, दैट इज हाउ यू लर्न, बट डू इट. जैसे मैंने कल बोला था, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी इन हाउ यू डू इट. क्या बन रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बन रहा है ना वो इम्पोर्टेंट. ठीक है, so that's it for today. We'll wind up here and we'll meet again on Friday 8:30. I'll send the invites. I'll post the scope of work, the project scope on the group itself, a proper scoping, so that we can continue that ahead. All right, guys. Thank you so much. Have a nice day. Kal shed chutti hai. Happy Eid to everyone. And yes, take care. Bye-bye. Happy designing. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.